वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक इवोल्यूशंस विथ जनरल नॉलेज पीएम सक्सेस। यहाँ पे हम टोटल जीडीपी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। बिना देरी के लेट्स बिगिन ऑन इट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन जीडीपी मींस ग्रॉस डेमोस्टेटिक प्रोडक्ट experiences significant growth and changes over the year. Here is a brief overview of India GDP history. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्री इंडिपेंडेंस ईयर बिफोर 1947. Okay, India has a British colony during this period, and its economy was primary agrarian. There was a limited industrializations, and the country GDP was relatively low. The next second one, that is post-independence era. In 1947 to 1991, after gaining the independence in 1947, India adopted a mixed economy model with an emphasis in the states-led industrializations and a planning. India's GDP growth was moderate. There are phases of rapid growth and economic reforms, but overall progress was slower compared to some other Asian economics. Okay, that's the third point. The liberalizations and economic reference reforms in 1991 onward. In 1991, India initialized a series of economic reforms aimed at liberalizations, the economics, and integrations. With the global market, this period marked a significant turning point for India. Oriented reforms, trades, liberalizations, and privatizations efforts leads to higher GDP growth rate. फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे कि यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसके जो सब ब्रांचेस है, लिबरलाइजेशन, देन प्रिविलाइजेशंस, देन ग्लोबलाइजेशंस. ओके, नेक्स्ट फोर पॉइंट, दैट इज 21st century growth, that is 2000 to 2010. Indian experiences robust economic growth during the year 2000s and 2010. The country The country IT's industry, manufacturing sectors, and service sectors, including outsourcing and software services, played a significant role in the driving economic expansions. India became one of the world's fastest growing major economy during this period. Then in the fifth point, we see the recent year 2010 to onwards. India economic growth continues in 2010, although there were fragmentations due to various factors such as global economic conditions and demonstrative policy changes. Country, the country GDP continues to increase any sector, and the sectors like technology, services, and manufacturing remains key contributions to economic output. And here last we see, it's important to note that India GDP figure has a very view over the year due to changes economic policies. Global economic conditions, and a demonstrative factor for the most recent and detailed history data on India GDP. It is based for official source such as the several bank, several banks of India or the Ministry of Finance, as they regularly publish comprehensive economic report and a statistic. And here we see the India OECD, that is week tracker India. Okay friends, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 जैन से लेकर के तो जैन 2023 तक का आपको यहाँ पे जीडीपी का टोटल ओवरव्यू दिखाया गया है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं चार्ट में बाय द ग्राफ व्यू में.
ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अबाउट 70 to 80 के बीच में जुलाई के टाइम में था, जुलाई से पहले। देन नेक्स्ट अप एंड डाउन, एंड लास्टली देखने जाओ तो 115, दैट इज 115 का एवरेज है वीकली जीडीपी के हिसाब में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली ग्रोइंग जीडीपी योर। ओके, अब आप पॉज करके देख लेना इसको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग जनरल नॉलेज पीएम सक्सेस। See you in the next video. Thank you friends.